grandmother's farm and I'm going to show you around here. Come on. So this is the walking path where we used to go. Okay, this is a rice field and over there, if you can't see, it's sugar cane. Let's explore. Oh, it's so small like a frog. Frog. Where did that froggy go? Never mind. Let's continue. We have so many rice fields. Look at this. Full of rice. When they'll be more big, we'll get rice. Right. From there, we can give the plants water. I'll show you guys. Come on. Guys, this is the well. When it will be full of water, it will come here and go to all the plants. And let's explore more. This is the sugar cane. Look, it's very huge here now. Before it was small, now it's big. Okay, now let's explore that side. Hi, this is our mango tree. Maybe there's some mangoes. There's a big mango tree trunk in the way. I'm gonna go like this. Voila! I'm hiding, guys. Hey! This is our guava tree. And here are some nearby guavas. And there is a big one right up there. You can't see, but it's right up there, very high. I tried to get a guava. So many guavas here. I can't reach, but though. Guys, look. This is a fresh guava. Look. I'm gonna taste. Now I'm gonna taste this guava. Is it edible or not edible? Let's taste. It's edible. Guys, I've collected so many guavas. I'll show you now. This is our farm. Right over there is our village, small village. I'm gonna show you now my guavas which I collected. Look guys, here are a perfect bag and here are so many guava that I have collected. Now do you guys see how many guavas should I collect? Look, so many guavas. And this is our beautiful farm. That's our village over there. And this is rice field. Guys, the guava is tasty and over there is some grass field. Guys, here is the grass field and there are so many crows in this country. Look, they have cut all the grass. Before it used to be so small grass, now there is big and now they have cut it. The people who work here. Back of me, this is my grandmother's village. All other sugarcane farms. Look. So big, yeah. Guys, there's a peacock over there. Look, that's a real peacock. Where did it go? Guys, there's a peacock. Okay, friends. Now I'm in my Nana's house. So look at my Nana's house. Okay, now we are going to go my Nana's farm. So let's go.
Okay friends, now I'm gonna introduce my cousins. Their name is Manan Ishana. The girl one is Ishana and the boy one is Manan. This one is Manan. Hi guys. And this is Ishana. Say your name. ईशाना मनन मेरा नाम ईशाना है मैं यूकेजी क्लास में पढ़ती हूँ हाय गाइस मेरा नाम मनन है मैं यूकेजी क्लास में पढ़ता हूँ Farm and this is the place where the hen and rooster used to be. Now they're all gone. So now I'm gonna show you around here. Come on. चलो चलते हैं This is our guava tree and we have collected 3 guavas. Look. ये पपीते का पेड़ है और ये हल्दी का पेड़ है Okay friends, I have found my Nana ji. It's over there digging. Now let's go and meet him. Go. नमस्ते ताऊ जी नाना जी आप क्या कर रहे हो? प्याज लगा रहा हूँ। ओके ओके नाना जी आप सारे पेड़ के बारे में बताओ। ले सुनो नींबू ठीक है वो महुआ पपीता कतर की खजूर कटहल बडल पपीता आम लंगड़ा पपीता कटहल बडल पपीते ये ग्रीन एप्पल बेर बग्गू गोसा नींबू ये देख फूल है ये 12 के 12 नींबू आई ये रहे फूल। हाँ शान है पंजाब नाशपाती ग्रीन रेड बेर बादाम चीकू चीकू कटहल बडल चीकू लगन छोटा सा चीकू है गाइस देखो छोटा सा चीकू है यहाँ। इसको तोड़ना नहीं अभी गाइस इसको बाद में तोड़ेंगे जब ग्रीन रेड बेरी खुमैनी वो पौधा खुमैनी आ जाओ
पूछा लालिमा, चलो अब अंदर दिखाएंगे। पूछा सूर्या, और यू इसका मैं नाम भूल गया। इसका अगले साल आम आवेंगे, यानी कि फरवरी मार्च में। यू लगा रखा यू वो सीताफल। ओके नाना जी। तो चीकू, चीकू सीताफल, ग्रीन रेड बेर, कितना छोटा सा चीकू, आलू बुखारा, किन्नू, अंजीर, किन्नू, मौसमी। ये देखिए लग रही। इधर ले। हाँ ये देख, मौसमी लग रही है। मौसमी। हम्म, ये देखो कितनी बड़ी लग रही है ना। हाँ साने वाह बग्गू गोसा, ये सारे ताइवानी अंजीर, जो एलोवेरा है ना। हाँ अलवीरा कितने सारे अलवीरा, और ये वाला वो जो क्या अनानास, जो वो क्या नीचे में जो पिड्डे, किन्नू, वो वाले अनानास, ये किन्नू, किन्नू जो कितना लग रहा। बहुत सारे लग रही किन्नू। चलो आप दे पपीते। कलमी लंगड़ा, नाना जी पपीते के भी है यहाँ, देखियो साने पंजाब नाशपाती, पपीते भी है यहाँ। हाँ पपीता, पिकानट, कोकोनट, यह है उसका कलमी, इसका का लगेंगे बेसा गुंछों में। ओ वाओ, सेब, सेब। हाँ दे सेब, इसको एक सेब भी नहीं दिख रहा। अरबी, अरबी, देख कितनी बड़ी बड़ी। युवा वो लोकाट, देख फूल लग जानी की। देखो ओ अरे चल यो नारियल, नारियल, 15 दिन पहले लिखड़े आयु। यो अमरूद, वहाँ का कॉपी। महाराष्ट्र का। क्या कहते हैं? ओहो मोटे मोटे अड़ू, आटा काट दिया कोई इतना पिछले साल इब गर्मी में बेशाब ला दिया था। ये जो हींग, मकड़ी, मकड़ी है यहाँ। चंदन, ओहो चल सफेद चंदन, ग्रीन एप्पल बेरी, चलो नीचे भी चलते हैं वहाँ से। ठीक है दादा बादाम, वापस से बताओ। कड़ी पत्ता, खुमैनी। मैंने छोटा सा रहा है। ये कलम ते तैयार कर रखे। चलो बस आ जाए कि अमरूद रह गया नहीं। अब हम आपको अंदर से फार्म दिखाते हैं, पर यहाँ पे मुर्गे नहीं हैं, तो हम आपको फार्म दिखाते हैं। आ जाओ यहाँ से हमारे। गो ओके यहाँ से है मुर्गे का एंट्रेंस, जहाँ से हम जा सकते हैं अंदर ऐसे। यहाँ देखो मुर्गे के
पंख है यहाँ, पर मुर्गी तो नहीं है। लेकिन उनके पंख हैं, देखो। बहुत पर वो सारे तो हैं नहीं है। गाइस यहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं। मेरे मुंह पैर सारी जगह लग रहे हैं, तो उतार रहा हूँ। मेरा भी लग रहा है। I hope you enjoy my video and don't forget to like and subscribe my channel, and thanks for watching and say bye bye Manan. बाय। Love to ride on a cycle again. No. हम वापस घर जा रहे हैं। चलो चलते हैं घर।